अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको शर शैतान से महफूज फरमाए। जो लोग मेरे चैनल में न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मेरी आज की ये वीडियो सेकंड ईयर जिसमें इंटरमीडिएट के गेस्ट पेपर बताऊंगा आपको इंग्लिश के, ठीक है, मिस्टर चिप से रिलेटेड। तो ये 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 100% गारंटी के साथ। तो आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इंग्लिश की बुक 2 गुड बाय मिस्टर चिप्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे टॉप 60। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, इंशाल्लाह इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे चैनल को आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो है, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू बिफोर गोइंग टू बेड? हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर चिप्स टू कीप हिज एक्टिविटीज अकॉर्डिंग विद ब्रूकफील्ड्स टाइम टेबल? हाउ डिड चिप्स measure his time while living in Mrs. Wickett's house? What is the name of doctor of Chips? या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट डिड ही सेड अबाउट द हेल्थ ऑफ चिप्स, यानी कि डॉक्टर ने चिप्स की हेल्थ के बारे में क्या कहा। व्हेन वाज चिप्स बोर्न? या क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट अबाउट चिप्स बर्थ? हु वाज मिस्टर विद वेदरबाय एंड विच टाइप ऑफ पर्सन ही वाज? हाउ डिड वेदरबाय एडवाइज मिस्टर चिप्स? व्हाट इज एनो डोमिनी? हु वाज कोले? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाउ डिड चिप्स पनिश हिज फर्स्ट स्टूडेंट कोले? ये क्वेश्चन आएगा, ये याद रखिएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू विद मिस्टर वेदरबाय। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मिस्टर चिप्स वाइल टॉकिंग हिज फर्स्ट क्लास। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इज गुड बाय मिस्टर चिप्स? What kind of person had Mr. Weatherby was? Describe Mr. Chip's first meeting with Mr. Weatherby. ये भी important question है। What contribution did Brookfield make to England? Important question है। या question आ सकता है, what kind of people did Brookfield produce? तो ये important question है, आप लोगों ने देख लेना इसको भी। Was Chips an ambitious teacher or write a note on Chips as a teacher? ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वाज चिप्स एन एम्बिशियस टीचर, या ये भी हो सकता है राइट अ नोट ऑन चिप्स एज अ टीचर। व्हेन वाज ब्रूकफील्ड एस्टेब्लिश्ड? इसको देख लीजिएगा। विच टाइप ऑफ स्कूल वाज ब्रूकफील्ड? व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन वर जनरली अडॉप्टेड बाय द स्टूडेंट ऑफ ब्रूकफील्ड स्कूल? व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What were the routine enjoyments of Chips at Mrs. Wickett's house? Important question है। How did Chips treat his guest? या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, describe the hospitality of Mr. Chips at Mrs. Wickett's house. Who was who was Collingwood? Important question है। How did Chips remember Collingwood? Why was the spring of 1896 important for Chips? Important question है। या ये भी हो सकता है, when did Chips became house master? Write the incident of first meeting between Chips and Catherine. Important question, most important. या how did Catherine and Chips fall in love with each other? Describe the appearance of Catherine. Important question है, who was Catherine? How was Catherine looked? So, what were the ideas of Catherine Bridges? What qualities of Chips inspired Catherine? Important question है. Why did Chips like Catherine? Important question है. Why did Catherine like Chips? और how was the teaching profession liked by Catherine? Important है. Catherine से related जितने question होंगे उनको अच्छे तरीके से देख लेना. What were inadequates of Chips about which the often regretted? Describe the event of marriage of Catherine. Important है. How was Chips' marriage with Catherine? Important है. मैंने कहा Catherine से related जितने भी होंगे आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। Which type of person was Mr. Chips? और ये भी हो सकता है, write the personality of Chips before marriage. Important question है ये।
What influence did Catherine Bridges exercise on Mr. Chips? What were consequences results of match between Brookfield and Mission? Important question है ये question ये भी हो सकता है Why was the soccer match important played between Mission and Brookfield? What recollections did disturb Mr. Chips? Why could Chips not able to write a book on his memories? Important है देख लीजिएगा When was Catherine and her son died? Important, most important question. Describe any incident from the life of Chips which shows his commitment to Brookfield School. Why did not the April Foolry leave any impact upon Chips' mind? What was the mental condition of Chips after the death of Catherine? Important है. Why was it important for Chips to retain house mastership after the death of Catherine? What impacts did death of Catherine exert put on Chips? Important question है कि चिप्स की क्या हालत थी जब उसकी वाइफ वफात पा गई. What was the condition of Chips when he took roll call after the death of his wife? ये भी important question है, ये आ सकता है. What was the call between Chips and Ralston? ये भी देख लीजिएगा, important है. Write down personality of Ralston. यानी कि जितने भी इस प्ले के अंदर करेक्टर यूज हुए हैं ना, उनके बारे में आप लाजमी देख लीजिएगा. उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है. हु वाज मेल्ड्रन? तो ये भी इम्पोर्टेंट है. व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ चिप्स ड्यूरिंग स्ट्राइक ऑफ रेलवे मैन? व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेसन एंड इंसिडेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टाइटैनिक? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल ओवर रॉ बिटवीन रॉल्स्टन एंड चिप्स? Write the incident of German missiles in Brookfield. What were the conditions during war days? Who was Mr. Charteris and how did he die? Why was Chips regarded as pre-war man? ये भी देख लीजिएगा, important है. How did Chips take his class during war shelling? What were the damages destruction occurred during war? What is the importance of November 11th, 1918? Important question है. What do you mean by duration over? Describe the air raid at Brookfield. What was the will of Mr. Chips? Important है. Describe the Linford meeting with Chips. Important है. Who was Linford? Important question. How was Chips deeply moved by Linford's word? Goodbye, Mr. Chips. What were the feelings of Chips before his unconsciousness? Who was Cartwright? Important. Describe the death scene of Chips. Important. What is the theme of novel? देख लीजिएगा. How did Cartwright inform the death of Chips in Brookfield? Important question है. तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के सेकेंड ईयर के बुक 2 के मिस्टर चिप्स के मोस्ट टॉप इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस. इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है. मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरी हौसला अफजाई करनी है. चूंकि मैं यूट्यूब पर नया हूं तो इसीलिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ. वस्सलाम.